Good afternoon, everyone, and welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is 𝗟𝗲𝗴𝗹, and I hope everyone is doing very, very good today. I hope you can hear and see me clearly, and I hope you're eager to know what are the changes that have happened this year in AILET, and what should your strategy be that you're able to deal with this change. So, thank you, Diya and Garima. Good evening, good afternoon, whatever you call it. So, आज के सेशन का एजेंडा ये है कि हम बात करेंगे कि एलेट में ओवर द इयर्स हमने क्या चेंजेस देखे हैं स्पेसिफिकली आज इस ईयर एक स्पेसिफिक चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है एलेट में एंड बिकॉज ऑफ द चेंज दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एलेट आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हाउ शुड यू अप्रोच द पेपर स्पेसिफिकली व्हेन यू सिटिंग फॉर मॉक टेस्ट एंड द एक्चुअल एग्जामिनेशन so that you're able to clear the paper with better scores, better than what you're actually scoring in the mock tests currently. So make sure you apply the concepts that I give you in the class right now. You're able to apply that to the mocks and while you practice so that in the actual examination, you're able to score better as well. You're able to clear the cutoffs too. So agenda क्या होगा सेशन का हम डिस्कस करेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग करंट पैटर्न क्या है AILET का और उसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें अटेम्प्ट करने का क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगी और फिर देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे आपके लिए इंडिविजुअली आपके लिए कैसे काम कर सकती है बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक स्ट्रैटेजी ऑफ देयर ओन सो मैं ऐसे कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगी डिटेल्स दूंगी जिससे आप अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो आपके लिए काम करेगा Good evening, everyone. Good evening, good afternoon. Ma'am, what should be the ideal score for AILET mocks? देखो, ideally 150 में से आपको 90 plus तो score करना पड़ेगा, Pranjali. Because, you know, the number of seats, Pranjali, are really, really less in AILET. अगर आप mock scores की बात करते हो. Since the number of seats are so less in AILET, the cutoff usually goes higher. Because there are only a handful of students who get selected in the examination. Whereas अगर आप बात करोगे लास्ट कट ऑफ की जो क्लैट में जाती है वो बहुत नीचे तक जाती है तो आपको 90 प्लस टारगेट करना पड़ेगा इस AILET पैटर्न मॉक्स में और 90 प्लस कैसे पहुंचना है मॉक्स में स्पेसिफिकली is what we're going to be talking about in the session. Okay, so stick with me till the end. There are some information that I'm going to be imparting you till the end of the class. Okay, so before I begin with it, we have our second All India Open Mock CLAT that's beginning from 22nd of September and the window closes on 1st of October. So also this mock is for free for everyone. So if you are somebody who is a student of our batches or if you're somebody who hasn't enrolled for our tests, you can test series or classes, you can still take this test and you should take this test because this is an open mock which gives you an opportunity to compete yourself and see you standing amongst thousands of kids across the country. मॉक लो देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो और उसके बाद देखो आप किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकते थे एक बात याद रखना इस मॉक को लेने से पहले प्रीवियस ओपन मॉक का एनालिसिस देख लेना जहां हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए था सो टेक सम क्यूज फ्रॉम दैट एनालिसिस एंड देन सिट फॉर दिस मॉक सो दैट यू परफॉर्म बेटर यू नो व्हाट आर दोस इजी सिटर क्वेश्चंस जो आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए कौन से रैंडम क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे जो आपको छोड़ने चाहिए थे या which is good, दिया गरिमा which is very very good. अब 70 के आसपास आते तो देखते हैं कि अभी देखो क्या है जो हमको 90 तक पुश कर सकता है ठीक है इस नए पैटर्न के साथ उस पे आज बात करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं AILET के कॉलेज की देखा है उसका इमेज कभी That's how the college looks like in the best of the locations because ये हमारे कंट्री के कैपिटल में है और कैपिटल में भी बहुत आउटस्कर्ट्स में नहीं है यू नो यूजुअली क्या होता है NLUs ना बहुत आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड होता है बिकॉज दे नीड जैसे आप NLU जोधपुर देखेंगे बहुत दूर है NLS बैंगलोर देखेंगे बहुत दूर है सेंट्रल सिटी से this is like in the heart of the not in the heart but it's right there in the city it's in Dwarka okay the campus is brilliant the faculty is outstanding and it's there right where we have our Supreme Court right so you have good alumni, you have good faculty, you have good infra, everything excellent. Go for it. If you still haven't filled out the form, make sure you do that. I've seen a lot of kids talking about it in the class कि मैम CLAT का तो फॉर्म भर दिया but AILET का नहीं भर रहा हूँ. I don't understand why. मुझे कोई भी रीजन नहीं मिलता कि आपको क्यों AILET का फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए. Okay? Okay. So let's talk about by the way, AILET
2023 question paper is available on its official website. So प्लीज डाउन 2023 का 24 का पेपर अवेलेबल हो जाता तो फिर मैं ये सेशन नहीं लेती. 23 का पेपर अवेलेबल है, मेक श्योर यू डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट. ओके, और नहीं किया अभी तक तो कर लेना. स्पेसिफिकली अगर आप बैचेस में आ रहे हो तो ये दिस इज अनकॉल्ड फॉर, आपको करना चाहिए. अब देखो बात करते हैं मॉडिफाइड सिलेबस की. अभी क्या पैटर्न हो चुका है AILET का 2024 में. एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया था. Shambhavi, that's right, but I don't see any logic behind that for saving those 1.5K, because if you are able to clear this college, and trust me, this examination may be more competitive than CLAT is, but the type of questions are very easy compared to CLAT. ठीक है, तो इनका अगर आपको अप्रोच करेक्ट पता है ना, तो ये एग्जामिनेशन क्लियर करना आपके लिए कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा CLAT के कंपैरिजन में. सो प्लीज AILET का फॉर्म फिल करो. थोड़ा एक्सपेंसिव है फॉर्म्स, इट्स नॉट वेरी चीप, 1.5K है, बट जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि बार काउंसिल कह रहा है कि हम कंडक्ट कराएंगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से फीस ड्रॉप हो जाए. बात करते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है. लेटेस्ट पैटर्न में अभी द लेटेस्ट न्यूज इज दैट वी हैव 150 क्वेश्चंस and 150 marks in total and 120 minutes हैं. So you have 2 hours for this paper. Till last year you had 1.5 hours for this test to be taken. पहले क्या होता था, 5 different sections आते थे आपके पास में. You had GK, एक separate section, mathematics 10 नंबर का ही आता था बट आता था थोड़ा बहुत. ठीक है, फिर they did away with mathematics. फिर उन्होंने legal reasoning का अलग section लेते थे, logical reasoning का अलग section लेते थे, अलग अलग सेक्शंस आते थे. राइट, लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल भी आता था, लॉजिकल भी आता था. फ्रॉम द लास्ट 2 years व्हाट दे डिड वाज दे डिफाइंड द सेक्शंस इनटू 3 बेसिक सेक्शंस. इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स, 150 मार्क्स का पेपर है. लुक एट दिस. ओके, 50 मार्क्स का इंग्लिश है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, और लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क्स का है. इफ यू सीन प्रीवियस ईयर पेपर्स, मुझे बताओ ये 70 मार्क्स के लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है. ओके, एब्सोल्युटली यस, सिट फॉर इट. Okay, so it's okay, Pranjali. There was a learning you got out of it. You did not lose you lost the money, but you did not lose everything. You got a learning. And, touch wood, I'm sure you're going to clear a college this year. Don't worry about that. I can assure you this. Reading your name, I'm saying this on a live telecast. I'm sure you're going to make it to a very good NLU. AILET or some other NLU, I don't know, but you will make it to an NLU. Okay, so yes, talking about what comes in the logical reasoning section, it's technically CR. Most of it is going to be CR. Approximately 90% of these 70 marks is going to be CR, critical reasoning, which is going to be verbal ability oriented critical reasoning, which is going to be one-liner based critical reasoning, like paragraph based भी आ सकता है, passage based भी आ सकता है, one-liner based भी आ सकता है. कुछ 1-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के. लीगल रीजनिंग, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में हम लीगल रीजनिंग भी इंक्लूड करेंगे. बट लास्ट ईयर क्या आया था? नथिंग, जिल्च. दे वर मोर ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. सो इफ यू आर somebody who has an inclination towards logic, I think you should be certainly filling this form out. Okay, so okay, I'm going to say this for all the kids who are watching me live. Okay, all the kids. I'm not going to favor one over the other. मेरे लिए सारे बच्चे NLUs में जाइए, सब बच्चे मेरे पढ़ाए हुए NLUs में जाइए. What else could I wish for? That's what a teacher wants, है ना? All the kids that we have taught should go to NLUs. Okay, so I'm going to pray. By the way, happy Ganesh Chaturthi, everyone. I'm going to pray to Ganpati that happens. Okay. ओके, सो अब बात करते हैं. देखो, ये सेक्शन हुआ डिफाइंड, जो अब 3 सेक्शंस आएंगे. अनलाइक पहले कि 5 सेक्शंस आते थे, ये 3 ही सेक्शंस आएंगे. और इन 3 सेक्शंस में भी लॉजिकल रीजनिंग दे से दे विल इंक्लूड एनालिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, बट वो बहुत ही कम फ्रैक्शन का होता है. Probably 10% of these 70 marks would include a bit of legal reasoning and analytical reasoning. The rest of it is going to be verbal ability and critical reasoning. And like in the previous years, we had, we had 1.5 hours, right? 1.5 hours for
this paper. But अब आपके पास में 120 minutes, you have entire 2 hours for this paper. Now let me talk about how should your approach be now that you have additional 30 minutes for the entire paper. अब एक बार फिर से recap देखते हैं. What did you have? You had 3 sections. You had English, you had GK 30 marks, English 50 marks, and you have logical reasoning of 70 marks. मुझे एक बात बताओ, out of these 150 marks for those 120 minutes, do you think GK को जितना टाइम आप पहले देते थे 1.5 hour में और अब आपको 2 hours मिलने लग गए, do you think the time taken for GK should increase or reduce? What do you think? आप जो GK को टाइम देते थे जब 1.5 hour का पेपर होता था और अब वो 2 hours का पेपर हो गया है, GK को जितना टाइम आप देते थे पहले, क्या उसको आपको इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि आपके पास एडिशनल टाइम हो गया है अब? My answer is absolutely no. GK is something, although वो पैसेज बेस्ड आएगा, but AILET के जो पैटर्न का GK आता है ना, you do not have to read any passage here. There are direct questions and there's a simple funda. You either know the answer or you don't. 8 to 10 minutes में आपका GK section हो जाना चाहिए, including filling OMR of 30 questions. अब I'm sure आपको लग रहा होगा मैम 8 मिनट तो मुझे OMR fill करने में लग जाता है. If you are somebody who thinks that, you better practice filling OMR sheets. किसी स्टेशनरी शॉप जाओ, OMR sheet का बंडल लेके आओ, for every test OMR sheet में आंसर मार्क करो. Can you do that, everyone? GK always should be done. You know, when I speak to अभिमन्यु सर कहते हैं 5 मिनट में GK होनी चाहिए. मुझे लगता है नहीं यार सर, देखो, not everyone is अभिमन्यु राजपुरोहित, not everyone is सानिक, right? तो थोड़ा सा बच्चों को लिबर्टी दे देते हैं, 5 का 10 मिनट कर देते हैं उसको. They are very objective questions, they're absolutely direct. पैसेज पढ़ने का नीड नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ के if you think, okay, there was something in the passage that could have helped me, that's when you can devote some time to skimming through the passage. But you don't have to read the passage like you read it for English or logical reasoning. Certainly not. So maximum of 8 to 10 minutes, including filling of the OMR. अब आपने 10 मिनट में GK का सेक्शन पूरा कर लिया, assuming that. ठीक है? Absolutely enough. इतना भी नहीं लगना है. Okay? तो OMR का प्रैक्टिस करो, हो जाएगा 10 मिनट्स में मैक्सिमम. इफ यू सेव सम टाइम, किसी और सेक्शन को दे देना. अब बात करते हैं, आपके पास 10 मिनट्स आपने GK के सेक्शन में लगा दिया. नाउ यू आर लेफ्ट विथ रफली 110 minutes that you're going to devote to English language and logical reasoning section. So now let's talk about that. A lot of kids, जब ये change in the pattern हुआ था ना, a lot of kids started looking at the change in the pattern कि मुझे per question 10 to 15 seconds ज्यादा मिल गया. वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि पर क्वेश्चन में आप जीके का भी सेक्शन देखोगे. जीके के सेक्शन में आप पर क्वेश्चन 10 to 15 seconds नहीं इंक्रीज करोगे. ये 10 to 15 seconds इंक्रीमेंट ओवरऑल है, बट वो आपका ओवरऑल काम नहीं करेगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? It's going to be 110 minutes overall जो आपका बच रहा है. पर क्वेश्चन टाइम नहीं आप इंक्रीज कर रहे हो, आप ओवरऑल 110 minutes एक्स्ट्रा ले रहे हो for English language and logical reasoning. Now you as a student, as an aspirant, individually have to decide what is that I am better with. Considering this section will mostly have critical reasoning. And these passages are going to be factual, direct. One second, guys. There's a power cut. 1 second. Thank you. There was a power cut. Sorry. So ultimately, you see, you have 110 minutes extra. Now, इसमें मेरा favorite section legal तो है ही नहीं. Of course, यश इसमें legal नहीं आएगा. Or for GK, we don't need to read the passage. No, Aisha, most of the questions you don't.
Okay, for most of the questions you do not have to read the passage, 90% of them. Okay, now back to it. If you look at the English language section, the passages are small. ध्यान से सुनना मेरी बात सब लोग, ठीक है? Here comes your unique strategy. The passages are small. The passages are factual. They are data oriented. Okay, they are not like what CLAT gives you, लंबे passages, too much of inference. नहीं. Most of the questions here are going to be fact based. Most of the questions that are going to be direct. So you can just go back to the passage, read one line and you'll find your answer. I've taken a session on आप ये जो direct passages हैं जो लोगों को difficult लगते हैं कि ये अलग pattern है, उसको कैसे deal करना है, ठीक है? I'll make sure somebody attaches the link to that session under my video in the description box. You can watch that later on. उसको कैसे handle करना है उस video में मैंने explain किया है. So I'll reiterate, English language section में most of the questions are going to be factual here. ठीक है, इनको आप बहुत easily attempt कर सकते हो. According to me, 40 minutes for this entire section is more than enough. आप उसको कम टाइमिंग में भी कर सकते हो. Also, do you have to attempt all the passages? 9 RCs आए थे last year. Do you have to attempt all of them? What is your answer? Let me see, what do you have to say? Okay, current affairs and daily reading newspapers, so how much you make? Okay, I'm not answering that. Logical को improve करने का बता देना please. Okay. By the way, I'll attach that video. वहां मैंने logical का भी approach बताया आपको. Ma'am, how do we decide when they come from the same passage? Like, okay, Dia, I'll tell you, I'll give you wise advice. AILET is fond of twisting pattern, making it different. All these years that I've taught, AILET में एक चीज common है, वो ना CLAT, they don't abide by CLAT pattern. वो हमेशा कुछ अलग करते हैं. तो before you start with the paper ना, हमेशा 2 minutes अपने हाथ में रखो, just look at the paper. एक सेक्शन उठाने एक बार देख लो पूरा सेक्शन को कि इसमें कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है कि भैया मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसा क्वेश्चन है. इससे पहले देख लो कि इस तरीके का क्वेश्चन मैं कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं. Have a look at that. Before you start with the question, you invest like 5 minutes in the question and then you realize, oh my God, it's a bouncer for me and I'm unable to do it. So always give it 2 minutes. These 2 minutes will save you good 15-20 minutes in the entire paper. AILET कुछ भी, so random question put up कर सकता है. And that's why I say English language में या logical reasoning में you don't have to read every passage. अगर आपको लग रहा है एक ऐसा पैसेज है जो इतना chaotic है, आपके समझ के बाहर है, it takes you so much of understanding, जो इंग्लिश में कम होगा लॉजिकल रीजनिंग में हो सकता है, उस एक पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हो. यू कैन आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ में अगर एक पैसेज भी छोड़ देते हो ना, तो भी आप एक 90+ कट ऑफ रीच कर सकते हो. आई होप दैट्स लॉजिकल फॉर यू. सो डोंट एम एट सॉल्विंग एवरीथिंग. You can leave a paragraph or a passage or a pattern of question that's new that you haven't touched upon while you were practicing. If you see that in a mock, उसको बाद में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? बिकॉज वो पैटर्न शायद प्रीवियस पेपर में कहीं आया होगा, बट एट दैट जंक्चर डिसाइड टू लीव दैट. अंडर 40 मिनट्स अगर आपको ये पूरा सेक्शन करना है 50 क्वेश्चंस का, वो इजीली डुएबल है. लास्ट ईयर व्हाट दे डिड वाज 9 RCs जो आए थे, इट इंक्लूडेड बोथ द सेक्शंस. सो रीडिंग बहुत ह्यूमंगस नहीं था. 110 मिनट्स में आपको 9 RCs करने थे. यू कैन इजीली डू दैट. बहुत इजीली कर सकते हो आप उसको. उसमें भी अगर आप एक आरसी छोड़ रहे हो, कंसिडरिंग दैट typical RC, you have lesser to read. So 40 minutes according to me here and 70 minutes to logical reasoning, because यहां ट्रिक आ जाता है. Here comes the tricky questions की, जैसे वो बुक्स का पैसेज था, एक पैसेज में ग्रिड बना दिया, 3 तरीके की बुक्स को कंपेयर किया. देखने में ट्रिकी लग रहा है बट ट्रिकी कुछ था नहीं, बहुत फैक्चुअल था वो. तो एक बार देखो ये दिया क्या है. अप्रोच याद रखना, AILET में मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, डेटा बेस्ड पैसेजेस होंगे, स्किम करना सीखो उसमें. ओके, सो लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पैसेज मेडिसिन पे था, तो मुझे लगा बायोलॉजी, इसीलिए हो सकता था प्रांजलि you could have taken it in the end if you're not keen to take biology, if you did not understand biology so nicely. I don't.
I would have taken it in the end. Okay, ma'am, for English, shall we first read questions and then read passage? It depends on you, Aisha. You'll have to practice this in the mocks. Practice both the ways. See what works for you. For a lot of kids, it works that you read the questions before. For a lot of kids, you waste a lot of time reading the questions. You have to figure it out, okay? By practicing it in the mocks. So 70 minutes for logical reasoning. Now see, there are people who are very good with these direct questions, factual questions. अब देखो 70 minutes reduce करना है क्या यहाँ? इसको 60 कर लो, इसको 50 कर लो. 50 minutes में ये section आप easily 90% accuracy के साथ solve कर सकते हो. Any one of you, any layman, आप कितने भी फाड़ हो इंग्लिश के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर. सो इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश, आई रेकमेंड आप इस सेक्शन को एटलीस्ट 30 मिनट्स तो दो, अटेम्प्ट करो. आएंगे स्कोर्स, अप्रोच करेक्ट होना चाहिए. तो बनाओ किस तरीके से सेक्शन में आपको अटेम्प्ट करना है. फैक्चुअल पैसेजेस पहले पिक करो, फैक्चुअल क्वेश्चंस पहले पिक करो. आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके पास एटलीस्ट 30 डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे. उसको भी तुम 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लोगे. यू गुड टू गो. सो what I'm trying to say is that you have to figure out a strategy that's unique to you. आपको कितना टाइम किस सेक्शन को देना है. This is an idea that you have. Remember, abide by it. Do not give a minute more than this to GK. Stick to this and save your time for both of these sections. इसमें डिवाइड करो आप किस सेक्शन को कितना देना चाहते हो. ये सेक्शन आप इजीली 40-45 minutes maximum में cover up कर सकते हो. Remaining can be for logical, where you'll have tricky questions. Now keep that in mind and take the next mock. I'm sure it's going to help you. Okay? कोई बात नहीं अंकित, अभी भी टाइम है, 90 दिन कर लोगे. ठीक है? So keep that in mind. I am going to be attaching the link to the video जिसमें मैंने बताया कि ये tricky questions कैसे डील करते हैं. ओके और किस तरीके से AILET का पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. तो कौन से क्वेश्चंस पिक करने, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने. I'll be attaching both the videos there. Also, I want all of you, if you have a specific doubt कि मुझे AILET के लॉजिकल में प्रॉब्लम आती है या इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है या AILET के जीके में प्रॉब्लम आती है या AILET की किसी स्पेसिफिक चीज में प्रॉब्लम आती है, make sure you comment under the video. I will ensure that we have a video on that within the next 1 week. So I want you to comment under the video if you have any specific problem regarding AILET or its pattern or English section or logical or किसी specific type of question में problem आती है, comment कर देना. We'll ensure that there's a video on that. On that note, we've launched a test series for CLAT 2024 aspirants that comes for a very nominal cost. Make sure you take the test series, enroll yourself at the earliest. The more mocks you take, the better your chances are of clearing an examination. That's an unsaid thing. We've also launched a new batch for 2024 and 2025. So make sure you enroll yourself according to your target year as well. Okay. And sit for this open mock. It's for free, everyone. The window starts 22nd September and closes on the 1st of October, everyone. I shall see you in the rank list very, very soon. So comment on the video if you have any requests regarding AILET. We'll ensure that there's a video put up on that. Or subscribe to the channel, like the button, video ka, or these are our social media handles. Follow us here, download our app on Google Play. That's going to be all for today, everyone. Have a very, very good evening. God bless you. I shall see you on the app at 6.